And my first question to Mr. Chaturvedi. Mr. Chaturvedi, what has inspired you to step into the entertainment world and make your mark in films and television industry in Mumbai? And mark you, he has a very long journey and a very remarkable one from Khargon to Mumbai. It's truly a remarkable one. Over to you, sir. हेलो इंदौर, हेलो एवरीवन। घर आकर अच्छा लग रहा है। सो जर्नी यहीं इसी शहर से शुरू हुई। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय का, MSME, who have given me a chance to get an skill development certification from हमारे शायद मरी माता चौराहा एरिया है, आई थिंक। वहाँ से मैंने एज एन माई फर्स्ट सर्टिफिकेशन आई हैव रिसीव्ड। वहाँ मुझे ये सोच आई, ये आइडिया, या आप कह सकते हैं कि ये विचार आया कि शायद मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। और आगे मतलब मैंने वहाँ से एनिमेशन 3D एनिमेशन का सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग मिला था मुझे। उसके बाद मतलब आप कह सकते हैं कि द आइडिया है, मतलब एक छोटे से शहर में रहते हुए बॉम्बे जाके सोचना और एडिट करना, वो भी ये सोचना कि आपको फिल्म एडिटिंग ही करनी है। तो वो इंस्पिरेशन वहीं से आया कि आपने वो एजुकेशन ली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और फिर आप बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद मैं इस सोच से गया था कि आई माइट डू सम अपना न्यूज़ चैनल एडिटिंग और समथिंग, बट मुझे मतलब आप कह सकते हैं कि शायद भगवान ने ये चॉइस दी कि मुझे पहली फिल्म मिल गई, विच वॉज जोड़ी ब्रेकर्स। सो दैट वॉज माई स्टार्टिंग जर्नी एज एन असिस्टेंट एडिटर। ओवर टू यू। Thank you so much. Now my next question is to Nitish ji. Nitish ji is very well renowned, and as we know from the AV. Now I want a question in particular for you, that when did writing first shift from hobby to identity for you? Because you've been into marketing and HR and suddenly turning to be a writer, an author. So was there a defining moment? देखिए, बहुत साल पहले एक कवि सम्मेलन में एक कविराज ने अपनी कुछ ऐसे ही प्रश्न का उत्तर बड़े अच्छे तरीके से दिया था, तो मेरे को उनकी कुछ पंक्तियां याद हैं। तो कवि उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि एक दिवस हौले हौले यार मेरे कुछ यूं बोले, प्यार किसी से करते हो यार किसी पे मरते हो, यूं तो भोले दिखते हो कविता कैसे लिखते हो। अभी उत्तर आएगा। तो कविराज ने फिर जवाब दिया कि दर्द पेट में होता है, भीतर कोई रोता है, भोजन ठीक ना पचता है, कवि तब कविता रचता है। So something similar happened to me. This is many years ago in 2017. मेरे पिताजी उस समय कैंसर से लड़ाई कर रहे थे, एंड मेरे को रात को मैं उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहा करता था। सो वहाँ पे ड्यूरिंग वन ऑफ माई ब्रेक्स मैं रिफ्रेशमेंट के लिए कैफेटेरिया में गया, तो वहाँ पे देखा एक यंग हैंडसम मैन, ही वाज चैटिंग विद समबडी who I presume to be a woman on the other side of a dating app. तो डेटिंग ऐप पे उनकी चैट शुरू हो रही थी, तो वहाँ से मेरे को एक आइडिया आया, और वो आइडिया ये था कि देयर इज अ कमिटेड कपल, राइट, एंड देयर इन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ईच अदर, एंड येट द मैन थिंक्स ऑफ गोइंग आउट एंड मीटिंग other women on the dating app. Now why would he do that, right? So that's the second question that came to my mind. So मैं बहुत सारे जवाब सोचे, जो मेरे को इनमें से सबसे बढ़िया जवाब लिखा नॉवल लिखने के माध्यम से, राइट। सो आई एम नॉट सपोर्टिंग द बिहेवियर, आई एम जस्ट सेइंग जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइटिंग द नॉवल, राइट, द आइडिया विच आई थॉट वुड बी रियली गुड, स्लाइटली शरारती, तो वो मैंने आइडिया लिया और उसके ऊपर फिर सोचता चला गया। सो बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में बनने शुरू हो गए, और जब एक ऐसा मौका आया जहाँ पे रुका ही नहीं गया कि अब तो लिखना ही पड़ेगा, वहाँ से फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। दैट्स हाउ इट हैपेंड। Yeah, there is no looking back after that.
Now, Mr. Kanjilal. So मेरा writing toolkit के हम बात कर रहे हैं तो it is not only about the process of writing, it's about the craft behind it, the discipline, the story, the whole process of it. तो मैं सर से ये पूछना चाहूँगी कि many writers they say that writing, the process of writing itself is cathartic or therapeutic for them. So does writing actually act as a therapy for you? Hello. First of all, good evening to the people present here. I will wholeheartedly outpour my gratitude to the organizers of Indore Literature Festival. And I would specially thank Micromitti. The reason is, without these companies coming and sponsoring these kind of literature festivals, literature might lose its gloss and glory. We are able to introduce ourselves to you just because of these companies. So I would like to request everyone present here to applaud for Micromitti. Thank you. See, the question sounds conundrum. Whether you may condone or whether you may dissent, I will still play a mutinous character, for I love to be recalcitrant. People present here, please lend me your ears. Let me take you to a voyage. Let's embark. So imagine, I don't know whether you have read these stuffs. Imagine Albert Camus. Now he wrote Sisyphus, I hope you know that. Albert Camus' Sisyphus rolling that huge rock up the hill. It had been a sort of a punishment. And then it goes down. From there you find none other than Franz Kafka swinging on Robert Frost birches. Again, from realism to veiled fantasy. And if you find this to be a little absurd, then you can do one thing, that is close the window till someone smotes on the window and you find Poe's raven knocking and telling you that Browning's lover had murdered Porphyria. If you find this to be fidgety, then you can do one more thing. You can go for a ride with Tagore's postmaster and then find out tranquil in Vedvyasa's Bhagavad Gita. So see, what I'm trying to say here, I stitch too many stories into one. This is a technique, this is a style. When it comes to writing, and as you questioned, whether this helps me personally and even the readers at large, I would like to say that according to science, there is something called the prefrontal cortex. And we have three ways to express or to receive. We call it recipient, expression, and the limbic process. These are all connected with our emotions, right? So definitely when I write, I feel psychologically charged, emotionally charged, and that gets reflected in my work. See, the methods may be different. Like I told you about Camus and Frost, right? But see, the plot is the same. How you execute, how you digress, that matters. And along with that, if you refer to the elements, what I referred or quoted, they may refer to psychological disorders, they may refer to physiological problems or philosophical complexities. But at the end of the day, different techniques, you may use different techniques to define yourself. But still quoting, I would say the hawk knows many skies, but it hunts by the one which feeds it. So definitely, I think writing does contribute, as you said, at least to me and to many others. Thank you.